Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my students of class 8th of government UPS Malikpora. Now today we are going to learn question number 2. Exercise is 6.1. Now dear students, I am going to understand you the question first. The following numbers are obviously not perfect. It is given that the following numbers are not perfect squares. Give reasons. You have to give reasons why that very number is not a perfect square. So let us start from 1057. Dear students, this is not perfect square because I have already told you that numbers ends with 2, 3, 7 or 8 at units place are not perfect square numbers. This is in this number there exists 7 at units place, but we have learned that numbers ends with 2, 3, 7 or 8 at units place are not perfect square numbers. It is a fact given in earlier in the introduction of the lesson. So 1057 is not a perfect square. Now the question number 2 is part number 2, 23,453. So the same reason here, 23,453 ends with 3 at units place, and you know that the number which ends at 3 or exists 3 at units place is not a perfect square. So therefore 23,453 is not a perfect square. There, question number part number 3, 7,928. Here 7,928 ends with 8 at units place. Therefore 7,928 is not a perfect square numbers. प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान आपको क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो नंबर जिसके वंस पर या यूनिट्स प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर 8 आता है तो यूनिट्स प्लेस पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इस तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2,22,222 ends with 2 at units place. Therefore 2,22,222 is not a perfect square number. आपको सिर्फ यही याद रखना है, जिस पे भी वंस पे या आप यूनिट्स प्लेस कह सकते हैं 2, 3, 7 और 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वंस प्लेस. इस तरह आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो ज़ीरो तो नहीं है इसमें, तो इसके लिए भी हमको ये रीज़न देखना है. ये भी मैंने आपको बताया है. इसका रीज़न है कि इसके
3 ज़ीरोज़ आते हैं, जबकि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके सिर्फ 2 ज़ीरोज़ होते हैं या 4 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी वो इवन में होते हैं। उनका जो ये टोटल होता है वो इवन में होता है, यानी 1 2 और 3 4 और 6 और 8 as on. Here 46,000 is not a perfect square number because the number of zeros ending in 64,000 is 3, which is an odd number. Part number 6 here, 89,722 is not a perfect square number because the number ends with 2 at units place. इस तरह बच्चों यहाँ पर पार्ट नंबर 7 है, ये 22,000 सेम, इसकी भी वही यहाँ पर रिमार्क्स दिए गए हैं जो पार्ट नंबर 5 में दिए गए हैं. इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर as it has odd numbers of zeros at the end, such that 3. Part number 8 here, 50 means 5,05,050 is not a perfect square. इसका आप रीज़न बता देंगे. अभी आपको मालूम है, as it has 1 zero at the end, which is an odd number of zeros. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज the squares of which of the following would be odd numbers? For example, square of 3 is 9, and the fact is that 3 is an odd number and its square is also odd. Here 431 is odd number. Its square would be perfectly odd because it is a mathematical fact that the square of odd number is odd and even number is even. So dear students, if a number is odd, the square of that number will be odd, and if a number is even, then its square also be even. By considering this fact, we can solve the above problem. The problem number 1 is square of 431 is an odd number because 431 is an odd number. So its square, perfect square, would be absolutely odd. Square of 2826 is an even number because 2826 is an even number. Now the third part is square of 7779 is an odd number because 7779 is an odd number. Its square would be odd. Square of 82,004 is an even number because 82,004 is an even number. Now the students, आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ. शब बखैर.